Okay, so if you remember, in case of thesis writing, or in case of report writing, or in case of research papers writing, one of the most common element of engineering thesis or engineering reports is to write about graphs, is to write about tables, is to write about diagrams, is to write about charts, etc. Okay, so in most of the cases जब हम thesis लिखते हैं, चाहे वो फाइनल ईयर के हों, चाहे वो MSc के हों, चाहे वो PhD के thesis हों, या चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स जब हम परफॉर्म करते हैं वो लिखते हैं या वो सबमिट करते हैं, या जब हम फील्ड में होते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करते हैं। सो बहुत से केसेस में हमें हमारे सामने टेबल्स आती हैं, हमें टेबल्स बनानी पड़ती हैं, फिर उन टेबल्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमारे सामने ग्राफ्स आते हैं, वो ग्राफ्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं, या हमारे पास प्रोसेस डायग्राम्स बनते हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना होता है। So in day-to-day professional life, we come across such type of situations very regularly. So one way, how we can write about these graphs, how we can write about these tables, how we can write about these charts or diagrams or process diagrams, इनके फ्लो चार्ट्स होते हैं उसके बारे में, या बार चार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने कैसे लिखना है और कितना लिखना है। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है यूजुअली कि जी हम इन ग्राफ्स के बारे में कैसे लिखें, या स्पेशली जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा हमारे पास आ जाता है तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि जी इसको हम प्रेजेंट कैसे करें। प्रेजेंट समटाइम हो जाता है, या तो ग्राफ सॉफ्टवेयर से आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं, या फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो उस टेबल से हमारे सामने डेटा आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ हाउ वी कैन राइट अबाउट दिस, क्योंकि ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो थीसिस हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स हैं, या चाहे वो अदर एस्पेक्ट्स हैं, तो क्योंकि these are related to thesis or professional documents, therefore we are interested in जी इसके बारे में राइटिंग हम लर्न कर सकें। So in today's class we are going to learn about how we can write about graphs, how we can write about charts, how we can write about thesis, how we can write about other elements. Okay, therefore there could be different ways of learning those graphs and those tables and etc. But one way that I recommend for you people is to learn how IELTS prepare you for that. So we know that IELTS is International English Language Testing Services. This is an international recommended way of how to improve your learning. हमने पहले भी जिक्र किया था। सो हम जो राइटिंग पोर्शन है वो हम यहीं से डिस्कस करेंगे। राइटिंग पोर्शन इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर। सिमिलरली जो रीडिंग का पोर्शन है वो भी हम आइल्स से लेंगे, ताकि जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं, या हमारी रीडिंग स्किल्स हैं, या हमारी लिसनिंग स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव हो सकें। Okay, so for writing preparation, I'm sharing this IELTS document with you, and we would follow this document, how we can write or how we can improve writing. Okay, so I would simply go through these material, and we would discuss and we would try to learn how we can write about this. Okay. तो IELTS राइटिंग हैज 1 hour। यूजुअली जो IELTS राइटिंग मोड है उसमें 1 घंटा होता है उसके लिए। इन दिस टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 tasks। ओके, ये वैसे IELTS के हवाले से हमारा कंसर्न IELTS नहीं है, लेकिन IELTS के अंदर जो क्वालिटीज हैं या उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, कम से कम उसको हम लर्न करना चाहते हैं। टास्क 1 इज a report based on some graphical information provided on
the question paper. So sometimes you are given a graph, you are given a chart, you are given a diagram, you are given a table, you are given some illustrations. With few exceptions, the graphic information will come in one of the following: line graph, bar graph, pie chart, table or diagram illustrating a process. तो इंजीनियरिंग में भी क्या होता है, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी क्या, या तो हमारे पास टेबल्स होते हैं। अगर आपको ये 30 उठाए ना, तो इसमें 25-30 के करीब टेबल्स होंगे, 10-12 के करीब उसके अंदर डायग्राम्स होंगे, सिमिलरली उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स होंगे, और यही डायग्राम्स, यही टेबल्स, यही फिगर्स वगैरह एक्सप्लेन होती हैं। सिमिलरली जब हम फील्ड में जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स, हम स्केचेस होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, ओके, ग्राफ्स बनते हैं, और उन ग्राफ्स को, स्केचेस को हमने एक्सप्लेन करना होता है। ओके, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन ग्राफ्स को? पहला सेंटेंस क्या होगा, दूसरा सेंटेंस क्या होगा, पांचवा सेंटेंस क्या होगा, आखिर में क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, दरमियान में क्या लिखेंगे। जैसे हमने ईमेल राइटिंग पढ़ी थी, तो हमने डिस्कस किया था कि जी जिसको आप रेफर कर रहे हैं उससे आपने कैसे मुखातिब होना है, बॉडी कैसे आपने उसकी बनानी है ईमेल की, और आखिर में आपने कैसे लिखना है। सिमिलरली इन केस ऑफ writing about graphs, writing about tables etc, we need to know कि जी हमने इनके बारे में कैसे लिखना है। okay, we are not going to discuss task 2, okay, we are mainly talking about task 1. So the very first one is writing task 1, and that is a single line graph. The simplest case is a single line graph. You will be given a graph with a single line. So very basic case. Okay. So writing task 1, that is a single line graph. What happens in this case? You will be given a graph with a single line. Your task is to write a 150 words report to describe the information given in the graph. You are not asked to give your own opinion. हमने पढ़ा था टेक्निकल राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में कि जी हम अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं देते, हम अपनी तरफ से जो है कोई ओपिनियन शेयर नहीं करते। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ग्राफ में आती है, टेबल में आती है, ओके, प्रोसेस डायग्राम में होती है, हमने उसी के बेसिस पर ही रिपोर्टिंग करनी है। ओके, सो इस केस में क्या होता है, आइल्स में होता किस तरह है कि आपको एक ग्राफ दिखाया जाता है और आपने उसके बारे में 150 वर्ड्स लिखने हैं। तो 150 वर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर एक सेंटेंस है और उसके अंदर 10 से 15 वर्ड्स बनते हैं, तो अगर वो 150 वर्ड्स हैं, सो 12, 14, 12 to 14 or 15 sentences are going to be good enough about that graph. So whenever we see any diagram, we may be required to write 10 sentences about that. और अगर हम इस लिखने की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें, आई एम श्योर कि जब हम ग्रेजुएट होंगे तो फिर उस वक्त तक हमारी ये जो स्किल है that would have been improved a lot. Okay, so हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? What is being tested is ability to objectively describe information given to you. Okay, so जब भी हम किसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, so उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. Number 1 is we want to objectively, what the objective of that graph is, why we are sharing this particular graph. तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं. रिपोर्ट ऑन अ टॉपिक विदाउट द यूज ऑफ ओपिनियन. और ये जो ग्राफ्स होते हैं ये इसलिए देते हैं कि ग्राफ के जरिए से हम बताना चाहते हैं कि भाई ये स्टेटिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 की स्टेटिस्टिक्स हम उठाएं कि जी इतने लोग, तो अगर नंबर्स हमारे सामने हो, फिगर्स हमारे पास हो, डायग्राम्स हमारे पास हो,
तो उससे मतलब ये होता है कि भाई हम अपना नहीं कह रहे, ये इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये डाटा शो कर रहा है, ये प्रोसेस शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं. ओके, सो वी रिपोर्ट ऑन अ टॉपिक without the use of opinion. Okay, and use suitable language to describe the graph. और जब हम उसको एक्सप्लेन करें तो उसके लिए हमारे पास एक सुटेबल लैंग्वेज हो, प्रॉपर लैंग्वेज जो है ना, उसके जरिए से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, so this is a sample task. We would simply go to the practice session कि जी हमने इसके बारे में लिखना क्या है. So ये एक सिंपल केस है. Can you see the screen, Abdul Basit? So this is a sample task. You should spend about 20 minutes on this task. Write a report for a university lecturer describing the information in the graph below. You should write at least 150 words. 150 words. So जिसमें x एक्सिस पे नंबर ऑफ ईयर्स है 1960 से 1995 तक, ऐसा ही है. y एक्सिस पर हमारे पास केसेस हैं. सो दिस इज अ ग्राफ इंसिडेंस ऑफ x डिजीज इन सम लैंड. सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ केसेस और पीरियड ऑफ ईयर. कहां पर ये हो रहे हैं? some land may be any country, any space, any area. So in simple we say a some land. So these are the cases, number of cases, incidence of X disease in some land. These are discussed over here. Okay, so this is a graph between number of cases in some land or a period of time. Okay, so हमने इसके बारे में 10 sentences लिखने हैं. क्या लिखने हैं? 10 sentences लिखने हैं. So think for a while. Take your time. Okay. What is going to be the first sentence? What is going to be the second sentence? What is going to be the last sentence, for example? Okay. Think for a while. How good your answer is? Check the guidelines on the next page. हम किस आंसर को अच्छा कहेंगे, किस आंसर को हम अच्छा नहीं कह सकते, किसको गुड कहेंगे, किसको बेटर गुड, और किसको बेस्ट कहेंगे, गुड बेटर बेस्ट. ओके, सारे आंसर अच्छे होंगे जो भी आप लिखेंगे, लेकिन कुछ आंसर्स काफी अच्छे होंगे, कुछ एवरेज होंगे और कुछ गुड ही होंगे. सो व्हाट इज गोइंग टू बी फर्स्ट सेंटेंस? ओके, एनी वन ऑफ यू. हमारा जो पहला सेंटेंस होगा इस ग्राफ के बारे में वो क्या होना चाहिए? द ग्राफ इज अबाउट नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्स डिजीज. और ये हुआ कहां पर है? पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, समलैंड में है भाई. ओके, इंसिडेंस ऑफ एक्स डिजीज इन समलैंड बिटवीन दिस एंड दैट. कब से कब तक? 2000 से 2020 तक? मार्च 2020 से जून 2020 तक? नहीं भाई, it is between 1960 to 1995. So how is the pattern of the X disease from 1960 to 1995? The cases reported against X disease in some land. The graph is about that. Very good. So our first sentence is about. What is going to be your second sentence? What is going to be your second sentence? That is important. And then, do we have some brackets of writing about any particular graph? That we need to know. Okay? So, for an answer to be a good one, there is a criteria. For an answer to be a good one, or what are the guidelines for a good answer? अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि जी मैंने भी तो यही सवाल किया था, तो मुझे तो 10 में से 8 नंबर मिले और दूसरे को 10 में से 5 नंबर मिले. तो सवाल तो दोनों ने सॉल्व किए होते हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच के अंदर फर्क होता है. ओके, सो सिमिलरली अगर हमने इसी तरह का
क्वेश्चन आता है और हम इसी बारे में लिखते हैं. So what is the criteria for that?